consider a scenario where all the candidates have to be take their uh, two tests before appearing the interview, and the score of the each test should be greater than 75 and average is minimum is 80%. Then a call letter for the interview has to be sent, or else the rejection letter have to be sent. Okay, so here we are using the pseudocode. So this is a pseudocode to accept the two test score and to display the selection response according to the test score. A candidate is selected for the interview round if the individual score in each test is greater than 75 and average score across the two tests minimum is 80%. A call letter for the interview sent to the candidate who have been selected, or the rejection letter is sent to be raised. Now check numeric test 1, test 2 and n average. So we have the three tests, test 1, test 2, average. Accept the test 1 and test 2. Then for finding the average, test 1 plus test 2 divided by 2. So it is added the two number and find the average. Okay, तो एटा को हमें आउ गोटे वे रे भी करि परथांते हमें नेस्टेड इफ एल्स लगे करि परथांते फास्ट गोटे कंडीशन चेक हेतन ता पर आउ गोटे कंडीशन ता पर आउ गोटे कंडीशन ताले कोन हबो ना जेतले हमें मल्टीपल केस स्टेटमेंट हमें यूज करछे इट बिकम्स कंफ्यूजिंग इन द प्रोग्राम सो दैट हमें एठी कोन कले ना हमें मल्टीपल केस स्टेटमेंट यूज न करि कि हमें एंड ऑपरेटर यूज करले ओके टेस्ट greater than 75, test 2 is greater than 75, average is greater than equals to 80. So it display the interview call letter to be sent or display the rejection letter to be sent. Okay, जदि मोर तीनटा जगह कंडीशन ट्रू होचे एंड ऑपरेटर कोन कहूची जदि if all the condition are true मोर जदि सब कंडीशन टा ट्रू होची ताले मोर सिलेक्शन लेटर जीवो नॉर मोर रिजेक्शन लेटर जीवो. So begin numeric test 1, test 2, n average. Then accept एटी तीनटा लोकेशन वेरिएबल माने लोकेशन तीनटा एटी बनाई गला test 1, test 2 and average पाई. Then ମୁଁ ଏଠି ଭ୍ୟାଲୁ ନେଲି 75 79 75 79. Then the 75 is greater than 70 the 75 is greater than 75 एटी मोर कंडीशन टा फॉल्स हैला जेहेतु मोर कंडीशन टा फॉल्स हैला एटी मोर आउ एल स्टेटमेंट आसीबो रिजेक्शन लेटर टू बी सेंड आ एटी एवरेज भी काउंट कले भी होबनी एवरेज हे गला 77 तो एटी मोर कोन हे गला ना एटी गोटे कंडीशन फॉल्स हे गला एटी गोटे माने दीटा कंडीशन मोर एटी फॉल्स हे जाउची तो फॉल्स हे गला पर से मते देखौ जे एटी फॉल्स. देन एटी हमें यूज करवा रिजेक्शन लेटर टू बी सेंड एबे मु कोन करूची begin numeric test 1, test 2 and n average. Accept n test 1, n test 2. तो पूर्ण तरह में वैल्यू नवा it is creating a memory test 1, test 2.
then 80 and 84, 80 and 84, if you check, 80 is greater than 75, 84 is greater than 75. So more average ହେଇଗଲା 82 ହେଲା ତ 82 ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମତେ ଦେଖେଇବ display interview call letter will be sent. Then switch case construct, it is used when the variable needs to be compared with the multiple value. तो एठी आमे जदि एग्जांपल नबा आमे कोनोसी रेस्टोरेंट को जाउचे तो से हमको गोटे लिस्ट ऑफ आइटम दउची गोटे मेनू लिस्ट हमको दउची से मेनू लिस्ट रे मो चेक करबी कोन ना मु जो आइटम टा को ऑर्डर करबा को चाहूची से मेनू लिस्ट रे से आइटम टा प्रेजेंट अछि कि नहीं जदि से मेनू लिस्ट रे से आइटम टा प्रेजेंट नहीं से जो सेल्समैन किबा जो मैनेजर थिबे से कहबे ये this item is not available and today the special item is available so you have to take it or you have to have it. So switch case is just like that, it is having a list of value पूरा गोटे लिस्ट रहिबो तो आमे गोटे वैल्यू नबा से वैल्यू सहित आमे स्विच सब स्टेटमेंट सहित कंपेयर करियो आमे जेते बेले आमे डिजायर एलिमेंट ता पाई जाउचे आमे हमर एलिमेंट ता पाई जाउचे तो सेते बेले आमे आउ गोटे पार्ट को चेक करूनी तो आमे आइटम ता पाई गले हमर मिली गला तो आमे आउ थरे कंपेयर करना आमे सब जगह लिस्ट आमे पढुनी तो स्विच केस इज जस्ट लाइक दैट. सो आई एम सर्चिंग द record with the multiple case statement. स्विच रे कोन रहइबो मल्टीपल केस स्टेटमेंट रहइबो केस स्टेटमेंट कोन आमे जो वैल्यू ता नबा आमे से केस स्टेटमेंट से तो मैच करियो तो जो वैल्यू ता हमर केस स्टेटमेंट से तो मैच हे जाउची ताले मते से पर्टिकुलर रिजल्ट मते शो करियो आउ जदी कोनोसी वैल्यू सहित से मैच न कला ताले स्विच केस रे गोटे रहइबो डिफॉल्ट स्टेटमेंट तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट ता मोर एग्जीक्यूट होबो लास्ट रे तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड इफ नो ऑफ द केस स्टेटमेंट इज मैच माने मोर जदि कोनोसी केस स्टेटमेंट सहित मैच न कला ताले मोर डिफॉल्ट केस ता एग्जीक्यूट होबो बुझियला स्विच केस रा काम यस सर तो स्विच रे गोटे आमे वैल्यू नबा से वैल्यू टा को आमे चेक करबा मल्टीपल केस स्टेटमेंट सहित जदि कोनोसी केस स्टेटमेंट सहित से मैच करि जाउची ताले सेठी आमे गोटे यूज करिया ब्रेक स्टेटमेंट तो ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड आफ्टर गेटिंग माय रिजल्ट so there is no need to go for further searching and if my value is not matched with any case statement then at that timing your default statement is executed. Okay, default statement yes এটা দেখো সুইচ এক্সপ্রেশন আমি जो एक्सप्रेशन টা পাস করিবা এটি রহিবো जो एक्सप्रेशन टा हमें पास करो जो गोटे कांस्टेंट वैल्यू देथिबा so that constant may be a integer value or maybe it is a string value. Okay, so it will match with that and जो केस स्टेटमेंट सहित हो ताले से वैल्यू टा एग्जीक्यूट हबो execute हला धर केस 1 सहित मैच कला ताले से वैल्यू टा मते देखैला एटी जो स्टेटमेंट हमें लिखिबा को चाहू छे जो डिस्प्ले करिया चाहू से स्टेटमेंट डिस्प्ले कला आउट रहला केस 2 यदि मैच न कला तो केस 2 को जीवो आ जदि कोनोसी केस स्टेटमेंट सहित मैच न कला तारे मोर ऑटोमेटिक डिफॉल्ट स्टेटमेंट को जीवो बुझिला yes यस sir. सर So here we have one example that you have to take the value from 1 to 7 and when you pass 1 जेतरा हमें 1 पास करिवा से शो करिवा संडे 2 पास कले हमें शो करिवा मंडे 3 एमती अप टू 7 जाय पास करिवा 1 to 7 परे हमें जदि कोनोसी अदर वैल्यू हमें पास करिवा इट्स शोइंग यू इट इज ए इनवैलिड एंट्री एटा शो करियो
So this is a pseudo code. Begin a numeric n num. We are defining a number. Display enter a number. So it is normal if else condition में pass करें. So accept a number. If the number you are passing, if it is equals to 1, then it is showing you Sunday. If the number that you are passing, if it is equals to 2, then it is showing you Monday. If you are the value you are passing, if it is not matched with any case statement, then it is showing you the default value. The default, here default value is not there. Here else value is there. You have entered the number out of range. Then we have to convert this nested if else condition. So see that nested if else it Yes. make you confusion. Okay, and so that for that reason we are using the switch case. So begin numeric n num, enter a number. So you have to enter a number, accept a number. So you have to accept a number. Then switch which number you are accept, you put it here. If the value that you have to enter, if it is matched with the case one, then it is display the Sunday. Sunday. Then display Monday. If you pass the 2, then it is display the Monday. And if you pass then other value apart from 1 to 7, then default statement is used. Because सब statement रे 1 2 3 4 एमती 5 हमें define करिबा, Sunday Monday Tuesday एमती define करिबा, और सब तरह हमें break statement use करते. Suppose हमें 2 pass कले, तो 2 pass कला परे हमारे टी मैच हेगला, Monday pass हेगला, तो हमें break statement इठी use कर दवा. तो हमको आउ आगु जीवा दरकार नहीं, क्यों 2 पर हमें result पाई गले. So consider another example where you need to write a pseudocode that accept two number and any of the operator plus minus multiplication and division. So we have to pass. These are the numbers are there. and हमें एक character सब pass करिवा. हमें जो character टा pass करिवा, जदि से character टा match होची, then the corresponding action perform होगा. A pseudocode to accept the two number and any one of the operator like plus, minus, multiplication, division. Based on the operator, enter the pseudocode should add, subtract, multiply or divide the number and display the result. Then now we go for it. Begin numeric a norm1, norm2 and result. We're defining three number. Character char, we're defining a character value. So character variable is used for taking the character like plus, minus, division, that character it will take. Then it is asking you enter two number. So मोटी दीटा number मोटी enter करीबी. Accept the number 1 and number 2. Then display enter any one of the character. तो हमें को character इटे enter करी परिवा. Plus, minus, multiplication, division. Then accept character हमें से character उड़ा का accept करीवा. Suppose मो plus accept कर ली, तो दीटा number add है कि result दिखे हो. Minus accept कर ली, तो इटा minus हो. इटा गलती रे लिखा है इसी norm1 minus norm2 दिखे हो. Norm2. Then begin numeric number 1, number 2 result. So it is defining three location. Then we are defining character. It is create another memory location. Then accept number 1 and number 2. We are defining 20 and 14. Enter any one of the character like plus, minus, Plus, minus, multiplication and division. division.
accept character any one of the character, then switch character. तो मु को character टा switch करिवि, suppose मु plus, तो एटा plus टा मोर first रे match हे गला, एटी देखिला number 1 plus number 2 दिटा number एटी add कला जो number दिटा हमें pass करथियो. Then it is giving me the result 34. Then break hele, there is no need to check for further condition, मते आउ case statement को match करना दरकार नहीं. This is 34. तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन छड़ा हमें अलग किसी वैल्यू दबा, देन से तबले हमरा ब्रेक स्टेटमेंट अपियर हो. बुझियला? Yes, sir. तो इट इज ए क्वेश्चन फॉर यू. ओके, तुम्हें सब आंसर करके दियो, मते दउन के. ओके, काली मते एटा पठेबो. सर मु काली सब दे देबी. कर एक्सरसाइज न कले तुम्हें प्रोग्रामिंग बुझी परिबोनी. इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पार्ट. लॉजिक Yes, sir. तुम्हें जत्ते क्लियर हबो, माने तुम्हें एज अ एफिशिएंट प्रोग्रामर बनिबा को चाहू तो ये जिंस गुडा करिया पड़िबो. सो डोंट थिंक इट इज ए व्हाट टैक्स आई एम गिवन. तो इट मेक्स यू फ्यूचर, माने तुम फ्यूचर ही ब्राइट है. जो गोटे प्रोग्राम जते बेले आसीबो इंटरव्यू रे, ए प्रोग्राम ही तुमको हेल्प करिवो. ये छोट छोट लॉजिक तुम जब क्लियर कर दो आगो बहुत तुम कम आसो. एगुड़ा सब क्लियर Yes, कर, sir. बड़ बड़ प्रोग्राम तुम कर पारिबो. Okay, so it is a question. Take the snapshot of it. Consider the problem of automated telephone call transfer system to the various department of the company, such as marketing, finance, customer care, human resource, and information. Okay, so it is based upon your switch case. Switch case को नहीं कि तुम ऐटे कर पारिबो. Another example, that exercise you can also do it by using a switch case. Consider another example of where you need to write the pseudocode that accept a letter from alphabet and check whether it is a vowel or not. Okay. Now give me the answer. Which one of the following statement is used to exit from a switch case after the condition specified in the case statement is met and the case block is executed? Break statement. It is a break statement. मोर कंडीशन टा जते बड़े मैच हे गला, मो डाटा टा पाई गले, तो then I have to use a break statement here. Break statement. Okay. Yes.
then it is another question for you. Consider the pseudocode to accept the 5 number and display the highest number. Consider write a pseudocode that accept the 5 number. 5 number you have to take and find out which one is the greater. So write a pseudocode that accept the hours and number of resources. Hour and number of resources. Display the total number and productive hours. Very simple one. Again, the numeric n hours, resources and productive hours. तो आमे hours नेले, resources नेले, केतरा resource आमे use करूचे. तो productive hours equals to hours into resources. तो multiplied है क्या मुझे क्या हो? So write a pseudocode to accept the 3 number to display the number in ascending order. It is a question for you. Write a pseudocode that accept 3 number and display the number in ascending order. The snapshot नहीं जाओ, screenshot नहीं जाओ. Then write a pseudocode that accept the age of the user. Then display the category of the user based upon the age. If 0 to 5, then 12, 13 to 19 is teenager, 20 to 35 is young adults, 36 to 45 mature adults, 46 to 55 elders, 56 and above is seniors. So a category भितर रहिबो. So you can use the help of if else and logical operator you can use. मैं data use करेगी if else a logical operator. Okay. So in the next class we go for the looping. Next class time में looping part पढ़िबा. ए exercise गुड़ाको करिदबो. If you have any kind of difficulty, we discuss it in the next class. Then we move forward to the looping. Okay. Sir, next Yes, sir. class. Next class काली तुम्हारा IT रखिलबा जदी बुधवार थर्सडे कि फ्राइडे रखिबा हैला मु इन्फॉर्म कर देबी थर्सडे कि फ्राइडे रहिबो that will be on a late night रहबो Yes. दादी सर कहबो तो Yes, sir.